गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचल फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज, इट्स आल्सो नोन एज द लंग्स वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज। These are the volumes and the capacities useful to measure the function of the lungs. Okay, pulmonary functional test means अगर lungs में कोई डिजीज है या फिर लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटी है दैट विल बी अल्टर्ड. ओके, सो नाउ व्हाट आर द पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी? द फर्स्ट इज द टाइडल वॉल्यूम. फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम. ओके, देखो जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं. Here it is the 0, here it is the 2 liter, that is 2.5 liter, then 3 liter, then here it is the 5 liter for an example. Okay, now the normal tidal volume means नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन और ब्रीद आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम. मीन्स हम जो नॉर्मली एयर लेते हैं दैट इज इंस्पिरेशन, नॉर्मली निकालते हैं दैट इज एक्सपिरेशन, अगेन दिस इज इंस्पायरेशन, दिस इज एक्सपिरेशन. सो tidal volume means amount of air that can be breathed in or breathed out during the normal breathing is known as the tidal volume. Means amount of air that can be breathed in or breathed out during normal respiration is known as the tidal volume. The average volume for the tidal is 500 ml. Means हम एक बार जो इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं उसमें हम कितना एयर लेते हैं? 500 ml. Okay, so in 1 minute we take the so in 1 minute we take the 6 liter to 8 liter of the air. क्योंकि ह्यूमन नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. हम 12 to 16 टाइम पर मिनट रेस्पिरेशन करते हैं. तो अगर एक ब्रीदिंग में मैंने 500 ml एयर लिया तो 12 टाइम हुआ तो 6 लीटर और 16 टाइम होगा तो 8 लीटर. तो ये हो गया नॉर्मल ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन. उसका वॉल्यूम क्या है? 500 ml. नाउ द सेकेंड वन इज the inspiratory capacity, the inspiratory reserve capacity. Inspiratory reserve volume, not capacity. Inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume का मतलब क्या है कि it is the amount of air that can be breathed in forcefully over and above the normal breathing. Means this is the normal breathing. अब normal breathing के बाद आप कितना forcefully air ले सकते हो that is known as your inspiratory reserve volume and that is I.R.V. Tidal volume, it is known as the TV, that is tidal volume. It is called the I.R.V. I.R.V. का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन ओवर एंड अबोव द नॉर्मल इंस्पिरेशन. ओके, मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद इन forcefully over and above normal inspiration.
मीन्स नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितनी एयर ले सकते हैं, तो दिस इज योर नॉर्मल इंस्पिरेशन। उसके बाद आप जो एयर ले सकते हो दैट इज नोन एज योर I.R.V। एंड वॉल्यूम कितना होगा उसका, तो इट इज अराउंड 2.5 लीटर टू 3 लीटर। ओके, तो ये क्या हुआ, टीवी, दिस इज कॉल्ड दी टीवी, दिस इज कॉल्ड I.R.V। okay, this is the TV, this is called I.R.V। now उसके बाद है expiratory reserve volume। okay, so now what is expiratory reserve volume, तो in expiratory reserve volume that is similar as inspiratory reserve volume, उसमें क्या होगा, it is the amount of air that can be breathed out forcefully over and above the normal expiration। okay, means expiratory reserve volume। okay, so in expiratory reserve volume the volume is, देखो it is, so this is the normal expiration, दिस इज द नॉर्मल एक्सपिरेशन। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नॉर्मल एक्सपिरेशन है। उसके बाद अगर आप जितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो दैट इज नोन एज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ये क्या हो गया, दिस इज योर नॉर्मल एक्सपिरेशन। उसके बाद ये हो गया आपका E.R.V। okay, so E.R.V means it is the amount of air that can be breathed out forcefully over and above नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितना फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर सकते हो दैट इज नोन एज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है दैट इज द रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। रेसिड्यूअल वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ air remain in the lungs after forced expiration। मतलब आप अगर फोर्स एक्सपिरेशन कर रहे हो तो दिस इज योर फोर्स एक्सपिरेशन, उसके बाद ये एयर रह जाता है। सो दिस इज कॉल्ड योर R.V। दिस इज कॉल्ड दी R.V। ओके, तो दिस आर द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी, तो फर्स्ट क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, आप कितना नॉर्मली एयर ले रहे हो और कितना निकाल रहे हो। तो हम हर एक ब्रीदिंग में 500 ml एयर लेते हैं और 500 ml एयर निकालते हैं। ओके, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, इट इज नोन एज योर टाइडल वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो इट इज नोन एज अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन फोर्सफुली ओवर एंड अबव द नॉर्मल ब्रीदिंग। मीन्स आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन इतना हो गया, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना एयर ले सकते हो दैट इज नोन ऑफ योर I.R.V। फिर E.R.V, तो E.R.V का मतलब क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स आप इतना नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना एक्सपिरेशन कर रहे हो दैट इज नोन ऑफ योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड R.V का मतलब क्या है कि अगर आपने इतना एक्सपिरेशन कर लिया फोर्सफुली, उसके बाद लंग्स में ये वॉल्यूम रखता है, तो इसको बोलते हैं R.V। मीन्स अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, इट इज कॉल्ड दी R.V। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 1000 to 1100 ml
और रेसिडुअल वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होगा 1100 ml to 1200 ml. Okay, so these all are the volumes of the pulmonary system. Okay, now next topic में हम देखेंगे capacities. So first is the inspiratory capacity. First is the inspiratory capacity. Inspiratory capacity का मतलब क्या है कि व्हाट इज योर टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आप कितना एयर ले सकते हो. सो आप नॉर्मली कितना ले सकते हो, तो टीवी ले सकते हो, टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो. उसके ऊपर आप कितना ले सकते हो, I.R.V भी ले सकते हो. तो आपका टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, टीवी प्लस I.R.V. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब इट इज टीवी प्लस I.R.V इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. कितना हो जाएगा ये, सो इट इज अराउंड 500 ml प्लस 3000, तो इट इज अराउंड 3500 ml. दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अब नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, आप कितनी एयर निकाल सकते हो. ओके, सो दिस इज आप नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसके ऊपर फोर्सफुली आपने जो ये वॉल्यूम निकाला दैट इज E.R.V. सो योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज टीवी प्लस E.R.V. ओके, दिस इज योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहां से लेके यहां तक. सो ये हो गया आपका 500 प्लस अराउंड 1100 ml है क्या, 1000 to 1100 11 ले सकते हैं या फिर 1000 भी ले सकते हैं. सो इट इज 1500 ml. नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज. थर्ड क्या है, सो थर्ड इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. नाउ व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. जैसे हमने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था कि अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन. मीन्स नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना एयर रहता है लंग्स में, दैट इज नोन ऑफ योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया आपका, दिस इज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बिकॉज योर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इज योर नॉर्मल एक्सपिरेशन. After normal expiration, the amount of air remain in the lungs, it is known as the functional residual capacity. This is your functional residual capacity. Okay. Now, the next is the fourth, vital capacity. Now, what is vital capacity? So in vital capacity means amount of air that can be breathed in or breathed out during the force or the deep breathing, that is known as your vital capacity. Means it is the amount of air breathed in and out during force ब्रीदिंग. तो उसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी, दिस इज फोर्स आउट एंड दिस इज फोर्स इन. अगेन इट इज आउट एंड इन. ओके, सो टोटल क्या हो गया, दिस इज द टीवी, दिस इज द I.R.V एंड दिस इज द E.R.V. सो आप तीनों को सम कर लो, दैट इज टीवी प्लस E.R.V प्लस I.R.V.
तो ये क्या हो जाएगा 5000 प्लस 1000 प्लस 3000, so it is equal to 4500 ml. Okay, and last है total, the fifth one is total lung capacity. So total lung capacity means amount of air present in the lungs. The total amount of air present in respiratory system. Respiratory system is known as the total lung capacity, and the total lung capacity means this is the your total lung capacity. मतलब इसको हम क्या बोलते हैं आरवी, इसको क्या बोलते हैं वीसी. तो ये टोटल क्या हो गया, दिस इज द वीसी वाइटल कैपेसिटी एंड दिस इज द आरवी. तो पूरा क्या हो जाएगा, सो इट इज TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV. ओके, VC प्लस RV. ओके, सो VC कितना है, दैट इज अराउंड 4500. RV कितना है, अराउंड 1100. तो ये कितना हो जाएगा 5600 ml. ओके, so this is all your pulmonary capacities. तो pulmonary capacity, inspiratory capacity means आप कितना total inspire कर रहे हो, that is TV plus I.R.V. expiratory capacity मतलब आप कितना expire कर रहे हो, that is TV plus E.R.V. vital capacity means आप कितना breathe in और breathe out कर रहे हो during the forced sleep, so that is known as your vital capacity and it is TV plus E.R.V. plus I.R.V. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब आप अगर नॉर्मली एक्सपिरेशन कर रहे हो उसके बाद लंग्स में कितना एयर है, दैट इज नोन एज योर FRC, दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. एंड लास्ट क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज नोन एज योर टोटल लंग कैपेसिटी और उसका वॉल्यूम है VC प्लस RV. ओके, सो क्या करिए, ओके, okay, so this is all about the pulmonary volume and the capacity. Next video we will discuss the exchange of gases. Okay, thank you.